The gentleman from Wisconsin, Mr. Gallagher. The gentlewoman from California, Mrs. Kim. The gentleman from North Carolina, Mr. Rouser. The gentleman from South Dakota, Mr. Johnson. The gentleman from South Carolina, Mr. Wilson. The gentleman from New York, Mr. Jeffries. The gentlewoman from Massachusetts, Ms. Clark. The gentleman from California, Mr. Aguilar. The gentlewoman from Washington, Ms. Delbin. The gentleman from Colorado, Mr. Neguse. The gentleman from New Jersey, Mr. Pallone. The gentleman from New York, Mr. Meeks. The gentleman from California, Mr. Barra. The gentlewoman from Washington, Ms. Jayapal. The gentleman from California, Mr. Khanna. The gentleman from Illinois, Mr. Krishnamurti. The gentleman from Michigan, Mr. Tanadar. The members of the escort. Oh, sorry. The President of the Senate, at the direction of that body, appoints the following senators as members of the Committee on the part of the Senate to escort His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, into the House chamber. The Senator from New York, Mr. Schumer. The Senator from Illinois, Mr. Durbin. The Senator from Minnesota, Ms. Klobuchar. The Senator from Virginia, Mr. Warner. The Senator from New Jersey, Mr. Menendez. The Senator from Kentucky, Mr. McConnell. The Senator from West Virginia, Mrs. Capito. The Senator from Iowa, Ms. Ernst. The Senator from Montana, Mr. Daines. And the Senator from Idaho, Mr. Risch. That is. The members of the escort committee will exit the chamber through the lobby doors. तो आपने अभी सुना कमला हैरिस वहाँ मौजूद उपराष्ट्रपति अमेरिका और इसके साथ ही साथ स्पीकर भी वहाँ स्वागत करते हुए जो अमेरिकी कांग्रेस के तमाम सदस्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया जो कि बस अब से कुछ ही देर बाद यहाँ अमेरिकी कांग्रेस में एंटर करेंगे। बस ज़्यादा इंतज़ार नहीं और कुछ ही देर बाद भारत के लिए गौरव का क्षण इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे पुराने लोकतंत्र 200 साल पुराना लोकतंत्र और देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रखेंगे। और दूसरा अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2018 में इससे पहले पहुंचे The acting dean of the diplomatic corps. Take over. तो दो सदन अमेरिका के अमेरिकी कांग्रेस के सीनेट, अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लोअर हाउस और अपने आप में बेहद ये गौरव का पल भारत को
मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये क्षण एक ऐसा जिसको लेकर लगातार पूरी दुनिया में न सिर्फ दुनिया की चर्चा है बल्कि दुनिया सुनना और देखना चाहती है कि क्या कुछ Mr. निकल कर Speaker, the यहाँ से President's सामने आता है। Cabinet. Otherwise, without you, one cannot do. Excellency, good afternoon. It's an honor. Savannah. Thank for this opportunity. Well, of all the people I want to invite to do a joint session. Staff participating, otherwise, without you, one cannot do. Excellency, good afternoon. It's an honor. Savannah. Thank for this opportunity. Well, of all the people I want to invite to do a joint session. Staff participating, otherwise, without you, one cannot do. तो इस बीच जैसा हमने आपको बताया गहमा गहमी बढ़ती हुई और बिल्कुल फुल पैक्ड यहाँ ज़ाहिर तौर पर अमेरिकी कांग्रेस, चूँकि दोनों ही हाउसेस के जो सदस्य हैं वो सभी मौजूद और इस ऐतिहासिक पल, इस ऐतिहासिक क्षण के वो भी यहाँ साक्षी बनना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और चूँकि हमने जो आपको कुछ बयान भी इससे पहले प्रतिक्रियाएं भी सुनाई किस तरह से जो सदस्य हैं अमेरिकी कांग्रेस के उनकी तरफ से भी कहा गया कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हैं, इनमें और भी ज़्यादा मजबूती आ रही है और दोनों ही देशों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं भारत और अमेरिका नज़दीक आएँ, करीब आएँ, साथ मिलकर आगे चलें। क्योंकि जिस तरह से भारत की जो प्रतिबद्धता है और तेज़ी से भारत विकास कर रहा है उसमें न सिर्फ भारत अमेरिका की मदद कर सकता है, भारतीय मूल के जो लोग लगातार अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका से भी भारत को बेहद सहायता मिल सकती है और जो भारत और अमेरिका के बीच में साझा व्यापार है वो भी नए आयाम हासिल कर रहा है, उनको भी और आगे ले जाने की ज़रूरत है। और इसी लिहाज से भारत और अमेरिका के बीच हर एक क्षेत्र में चाहे वो ऊर्जा का हो, साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, सूचना प्रौद्योगिकी का हो, पवन ऊर्जा का हो, नेचुरल ये कहें कि रिसोर्सेज से संबंधित हो, और भारत की इकॉनमी की बात करें या दोनों देशों की इकोनॉमिक की बात करें, आर्थिक आधार पर, सामरिक आधार पर, रक्षा क्षेत्र में, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मिलकर आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ इन दोनों देशों की तरक्की होगी बल्कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, दोनों ही देशों के नागरिकों को इससे फ़ायदा मिलेगा और ये एक तरह से कहें कि मजबूत गठजोड़ बनता हुआ भारत और अमेरिका का। हमने पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान देखा भी कि किस तरह से अमेरिका और भारत ने मजबूती के साथ आतंकवाद के ख़िलाफ़ और अहिंसा के ख़िलाफ़ अपनी बातों को सामने रखा और किस रूप में चाइना को भी खरी खरी दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से बातों को रखा गया। और चाइना की नज़र ज़ाहिर तौर पर इस दौरे पर है, क्योंकि जिस तरीके से एक आतंकवादी को बचाने की फिर से कोशिश चाइना की तरफ से की गई और तब वीटो का इस्तेमाल किया गया, वो अमेरिका ने भी देखा, वो भारत ने भी देखा और दोहरा चरित्र जो है लगातार एक बार फिर से चाइना का सामने आया। तो ये
जो दौरा है, ये दौरा न सिर्फ भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि दुनिया को भी ये दर्शा रहा है, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो, बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से एक नया ध्रुव तैयार हो रहा है, एक नया गठजोड़ तैयार हो रहा है, जो मिलकर एक साथ आगे बढ़कर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसमें दोनों ही देशों को इस चीज़ की ललक है कि किस तरह से एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है, कहां से एक दूसरे को आगे बढ़कर ले जाया जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. Mr. Speaker, Madam Vice President, distinguished members of the US Congress, ladies and gentlemen, Namaskar. It is always a great honor to address the United States Congress.
It is an exceptional privilege to do so twice. For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. I see that nearly half of you were here in 2016. I feel your warmth as old friends. I can also see the enthusiasm of a new friends in the other half. I remember Senator Harry Reid, Senator John McCain, Senator Orrin Hatch, Elijah Cummings, Elsie Hastings, and others who I met here in 2016 and who are sadly no longer with us. Mr. Speaker, standing here 7 Junes ago, that is the June when Hamilton swept all the awards, I said that the hesitations of history were behind us. Now, when our era is at a crossroads, I am here to speak about our calling for this century. Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort, and travel. It is a Thursday afternoon, a fly-out day for some of you. So I am grateful for your time.
I also know how busy you have been this last month. Being a citizen of a vibrant democracy, myself, I can admit one thing, Mr. Speaker, you have a tough job. I can relate to the battles of patience, persuasion, and policy. I can understand the debate of ideas and ideology. But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. I'm happy to help out. I'm happy to help out whenever you need a strong bipartisan consensus. There will be and there must be a contest of ideas at home. But we must also come together as one when we speak for our nation. And you have shown that you can do it. Congratulations. Mr. Speaker, the foundation of America was inspired by the vision of a nation of equal people. Throughout your history, you embraced people from around the world and you have made them equal partners in the American dream. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who has made history. I am told that the Samosa Caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. Over 2 centuries, we have inspired each other through the lives of great Americans and Indians. We pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. Thank you.
We also remember many others who work for liberty, equality, and justice. Today, I also wish to pay heartfelt tribute to one of them, Congressman John Lewis. Mr. Speaker, democracy is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. Democracy is the idea that welcomes debate and discourse. Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. Millennia ago, our oldest scripture said, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. It means that truth is one, but the wise express it in a different ways. Now, the US is the oldest and India the largest democracy. Our partnership augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. Mr. Speaker, last year, India celebrated 75 years of its independence. Every milestone is important, but this one was a special. We celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity. Not just of constitution, but also of its spirit of a social empowerment. Not just of our competitiveness and cooperative federalism, but also of our essential unity and integrity. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties
govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. Every 100 miles, our cuisine changes from dosa to aloo paratha, and from Srikhand to Sandesh. We enjoy all of this. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. In India, diversity is a natural way of life. Today, the world wants to know more and more about India. I see that. Curiosity in this house too. We were honored to receive over 100 members of the US Congress in India over the last decade. Everyone wants to understand India's development, democracy, and diversity. Everyone wants to know what India is doing right and how. Among close friends, I am happy to share the same. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. After all, we are 1/6 of the world's population. In the last century, when India won its freedom, it inspired many other countries to free themselves from colonial rule. In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. It means together for everyone's growth, with everyone's trust
and everyone's efforts. Let me share with you how this vision is translating into action with speed and scale. We are focusing on infrastructure development. We have given nearly 40 million homes to provide shelter to over 150 million people. That is nearly 6 times the population of Australia. We run a national health insurance program that ensures free medical treatment for about 500 million people. $500 million people, that is greater than the population of South America. We took banking to the unbanked with the world's largest financial inclusion drive. Nearly 500 million people benefited. This is close to the population of North America. We have worked on building Digital India. Today, there are more than 850 million smartphones and internet users in the country. This is more than the population of Europe. We protected our people with 2.2 billion doses of made in India COVID vaccines. And that too free cost. I may be running out of continent soon, so I will stop here. Distinguished members, the Vedas are one of the world's oldest scriptures. They are a great treasure of humanity composed thousands of years ago. Back then, women sages composed many verses in these Vedas. And today, in modern India, women are leading us to a better future. India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. Nearly 1.5 million elected women lead us at various levels. And that is of local governments. Today, women serve our country in the Army, Navy, and Air Force. India also has the highest percentage of women airline pilots in the world.
And they have also put us on Mars by leading our Mars mission. I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. Empowering women transforms the nation. Mr. Speaker, India is an ancient nation with a youthful population. India is known for its traditions, but the younger generation is also making a hub of technology, be it creative reels on Insta or real-time payments. Coding or quantum computing, machine learning or mobile apps, fintech or data science, the youth of India are a great example of how a society can embrace latest technology. In India, technology is not about innovation, but also about inclusion. Today, digital performance are empowering the rights and dignity of people while protecting privacy. In the last 9 years, over 1 billion people got a unique digital biometric identity connected with their bank accounts and mobile phones. This digital public infrastructure helps us reach citizens within seconds with financial assistance. 850 million people receive direct benefit financial transfers into their accounts. 3 times a year, over 100 million farmers receive assistance in their bank accounts at the click of a button. The value of such transfer has crossed $320 billion. And we have saved over $25 billion in the process. If you visit India, you will see everyone is using phones for payments, including street vendors. Last year, out of every 100 real-time digital payments in the world, 46 happened in India. Nearly 400,000 miles of optical fiber cables and cheap data have ushered in a revolution of opportunities. Farmers check weather updates, the elderly get social security payments, students access scholarships, doctors deliver telemedicine, fishermen check fishing grounds, and small businesses get loans with just a tap on their phones. Mr. Speaker, a spirit of democracy, inclusion, and sustainability defines us. It also shapes our outlook to the world. India grows while being responsible about our planet. We believe, Mata Bhumihi Putro Aham Prithviya. This means the earth is our mother and we are her children.
Indian culture deeply respects the environment and our planet. While becoming the fastest growing economy, we grew our solar capacity by 2,300%. Yes, you have heard right. 2,300%. We became the only G20 country to meet its Paris commitment. We made renewables account for over 40% of our energy sources, 9 years ahead of the target of 2030. But we did not stop there. At the Glasgow summit, I proposed Mission Life, lifestyle for environment. This is a way to make sustainability a true people's movement, to live it to be the job of governments alone. By being mindful in making choices, every individual can make a positive impact. Making sustainability a mass movement, we help the world reach the net zero target faster. Our vision is pro-planet progress. Our vision is pro-planet prosperity. Our vision is pro-planet people. Mr. Speaker, we live by the motto of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. Our engagement with the world is for everyone's benefit. The one sun, one world, one grid seek to join us. All is connecting the world with clean energy. One Earth, One Health is a vision for global action to bring quality health care to everyone, including animals and plants. The same spirit is also seen in the theme when we chair the G20, One Earth, One Family, One Future. We advance the spirit of unity through yoga as well. Just yesterday, the whole world came together to celebrate the International Day of Yoga. Just last week, all nations joined our proposal at the UN to build a memorial wall to honor the peacekeepers. And this year, the whole world is celebrating the International Year of Millets to promote sustainable agriculture and nutrition alike. During COVID,
We deliver vaccines and medicines to over 150 countries. We reach out to others, being disasters as first responders, as we do for our own. We share our modest resources with those who need them the most. We build capabilities, not dependencies. Mr. Speaker, when I speak about India's approach to the world, the United States occupy a special place. I know. Our relations are of great importance to all of you. Every member of this Congress has a deep interest in it. When defense and aerospace in India grow, industries in the state of Washington, Arizona, Georgia, Alabama, South Carolina, and Pennsylvania thrive. When American companies grow, their research and development centers in India thrive. When Indians fly more, a single order for aircraft creates more than 1 million jobs in 44 states in America. When an American phone makers invest in India, it creates an entire ecosystem of jobs and opportunities in both countries. When India and US work together on semiconductors and critical minerals, it helps the world in making supply chains more diverse, resilient, and reliable. Indeed, Mr. Speaker, we were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. Today, India and the US are working together in space and in the seas, in science and in semiconductors, in startups and sustainability, in tech and in trade, in farming and finance, in art and artificial intelligence, in energy and education, in healthcare and humanitarian efforts. I can go on and go on, but to sum up it, I would say the scope of our cooperation is endless. The potential of our synergies is limitless, and the chemistry in our relations is effortless. In all this, Indian Americans have played a big role. They are brilliant in every field, not just in spelling bee. With their hearts and minds, talent and skills,
and the love for America and India, they have connected us. They have unlocked doors. They have shown the potential of our partnership. Mr. Speaker, distinguished members, every Indian Prime Minister and American President of the past has taken our relationship further. But our generation has to honor of taking it to greater heights. I agree with President Biden that this is a defining partnership of this country. Because it serves a larger purpose. Democracy, demography, and destiny give us the purpose. One consequence of globalization has been to cover over concentration of supply chains. We will work together to diversify, decentralize, and democratize supply chains. Technology will determine the security, prosperity, and leadership in the 21st century. That is why our two countries established a new initiative for critical and emerging technologies. Our knowledge partnership will serve humanity and seek solutions to the global challenges of climate change, hunger, and health. Mr. Speaker and distinguished members, the last few years have seen deeply disruptive developments. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. Mr. Speaker, the dark clouds of coercion and confrontation are casting their shadow in the Indo-Pacific. The stability of the region has become one of the central concerns of our partnership. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific.
connected by secure seas, defined by international law, free from domination, and anchored in ASEAN centrality. A region where all nations, small and large, are free and fearless in their choices, where progress is not suffocated by an impossible burdens of debt. Where connectivity is not leveraged for strategic purposes, where all nations are lifted by the high tide of shared prosperity. Our vision does not seek to contain or exclude, but to build a cooperative region of peace and prosperity. We work through regional institutions and with our partners from within the region and beyond. Of this, Quad has emerged as a major force of good for the region. Mr. Speaker, more than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. Mr. Speaker, COVID-19's biggest impact was the human loss and suffering it caused. I wish to remember Congressman Ron Wright and the staff members who lost their lives to COVID. As we emerge out of the pandemic, we must give shape to a new world order. Consideration, care, and concern are the need of the hour. Giving a voice to the global south is the way forward. That is why I firmly believe that the African Union be given full membership of G20. We must revive multilateralism and reform multilateral institutions. With better resources and representation that applies to all our global institutions of governance, especially the United Nations. When the world has changed, our institutions too must change, or risk getting replaced by a world of rivalries without rules.
in working for a new world order based on international law. Our two countries will be at the forefront as partners. Mr. Speaker and distinguished members, today we stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. As the young American poet Amanda Gorman has expressed, when day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light if only we are brave enough to see it. Our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. I am reminded of a poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। If I were to say it in English, it would be rising its head in the skies, piercing through the dense clouds with the promise of light. The sun has just risen, armed with a deep resolve, overcoming all the odds to dispel the forces of darkness. The sun has just risen. Mr. Speaker and distinguished members, we come from different circumstances and history, but we are united by a common vision and by a common destiny. When our partnership progresses, economic resilience increases, innovation grows, science flourishes, knowledge advances, humanity benefits, our seas and skies are safer, democracy will shine brighter, and the world will be a better place. That is the mission of our partnership. That is our calling for this century. Mr. Speaker and distinguished members, even by the high standards of our partnership, this visit is one of the great positive transformation. Together, we shall demonstrate that democracy is better and democracy deliver.
I count on your continued support to the India-US partnership. When I was here in 2016, I said that our relationship is primed for a momentous future. That future is today. Thank you once again, Mr. Speaker, Madam Vice President, and the distinguished members of this honor. God bless America. Jai Hind. Long live India-US friendship. Thank you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 घंटे से भी ज्यादा का ये संबोधन अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कई अवसर ऐसे आए जब प्रधानमंत्री के इस संबोधन के दौरान जो तमाम अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स हैं उन्होंने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर मोदी की उन बातों का अभिनंदन किया, उसका इस्तकबाल किया, उसका स्वागत किया। और अब देखिए ये वो पल, ये वो अपॉर्चुनिटी जब सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने को आतुर, उनसे मिलने को आतुर। और आपने देखा भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई अंदर कांग्रेस के इस हॉल में जहां पर दोनों सदन इकट्ठा हुए हैं अमेरिका के, तो मोदी मोदी के नारों से ये पूरा सदन गूंज उठा। देखिए सेल्फी लेने की होड़, ऑटोग्राफ लेने की यहाँ पर एक कोशिश दिखाई देती हुई। तो पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान की, भारत के किस रूप में देखने को मिल रही है वो साफ जाहिर करती है कि भारत का कद, भारत का परचम दुनिया में किस रूप में लहरा रहा है। और ये भारत और अमेरिका की एक नई दोस्ती का आयाम है। भारत और अमेरिका की दोस्ती किस रूप में आगे जाएगी उसका ये एक नया प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में न सिर्फ भारत की तरक्की, भारत के लोकतंत्र, भारत की परंपराओं, भारत की विविधताओं, भारत की संस्कृति का जिक्र किया, बल्कि भारत आगे चलकर किस रूप में आगे बढ़कर एक नई रास्ते पर अग्रसर होना चाहता है, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहता है और कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका के साथ काम करना चाहता है। इन तमाम चीज़ों का, बातों का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई।
की तरफ से कहेगी कि भारतवंशी, उन्होंने अमेरिका में अपने श्रम, अपने तेज और अपनी काबिलियत के दम पर अमेरिका की तरक्की में एक बड़ा योगदान दिया और अमेरिका की कांग्रेस में, अमेरिका की संसद में भी भारतीय मूल के कई प्रतिनिधि, या यूँ कहें कि भारतीय मूल के कई अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ उन्होंने कमला हैरिस का भी जिक्र किया जो कि उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल से ही आती हैं। और जब तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार की जा रही थी, कही जा रही थी, तो बीच बीच में ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल भी किया गया। अपने स्थान पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बातों को सराहा गया, इन बातों को स्वीकार किया गया। और अमेरिकी संसद में बॉस, जी हाँ, अमेरिकी संसद में बॉस यानी भारत बॉस, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस। और आगामी जो साल है, आगामी जो दशक है, आगामी जो अब जो मौजूदा शताब्दी है, ये भारत फिलहाल देखिए ये कुछ ऐसे पल, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यादगार बल्कि तमाम जो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के, चाहे वो सीनेट अपर हाउस हो या लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उनके लोग यहाँ मौजूद। और एक झलक पाने पर अमेरिका की जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए, फोटोग्राफ लेते हुए, ये भारत का सम्मान, जाहिर तौर पर ये भारत के 140 करोड़ वासियों का सम्मान। ये देखिए जिक्र भी किया है, उस किस्से का भी यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे। आज से 30 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और अमेरिका में घूमने गए थे या किसी काम से गए थे। उस दौरान व्हाइट हाउस के बाहर उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर एक फोटोग्राफ खिंचवाया था जो पिछले दिनों हालांकि काफ़ी देखा भी गया था। और खुद इस चीज़ का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब उनकी व्हाइट हाउस में मुलाकात और बातचीत हो रही थी राष्ट्रपति जो बाइडेन से, तो जिक्र उन्होंने उस फोटोग्राफ का किया कि आज से 30 साल पहले मैं इस व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर एक मैंने फोटोग्राफ खिंचाया। और आज ये गौरव का पल इस मायने में कि आज व्हाइट हाउस के दरवाजे भारतीयों के लिए खोल दिए गए, क्योंकि ये ऐसा पहला अवसर जब किसी देश के प्रधान आए हैं, उनका संबोधन है, वो वहाँ पर एक मेहमान के तौर पर, राज्य के मेहमान के तौर पर आए हैं और जो व्हाइट हाउस का परिसर है उसको खोल दिया गया। भारत के मूल के तमाम लोगों के लिए बड़ी संख्या में लोग व्हाइट हाउस के अंदर एंटर हुए। उन्होंने वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना। वहाँ जो व्हाइट हाउस की बालकनी है, उस बालकनी में वायलिन बजाकर अपनी शानदार प्रस्तुति भारतीय मूल की युवती की तरफ से दी गई। और ये न सिर्फ वार्म वेलकम, जो हृदय से वेलकम कहें या पूरी तरह से कहें, जो इतना अच्छा गेस्चर और पोस्चरिंग दिखाई गई अमेरिका की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत के लिए, वो अपने आप में एक अद्भुत एक तरह से कहें कि तस्वीर पेश कर रहा था। और बिल्कुल बहुत ही प्रगाढ़ता के साथ, बहुत ही आत्मीयता के साथ यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, बातचीत करते हुए, सेल्फी वहाँ पर ली जा रही है, फोटोग्राफी का वहाँ पर लगातार दौर चल रहा है। और इसी के साथ वहाँ कुछ सदस्यों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ भी लिए गए। तो जो बड़ी बातें आपको हमने लगातार प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान बताई, वो आप ग्राफिक्स के जरिए साइड में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। सभी देशों की बात सुनी जानी चाहिए। यूएस सांसदों ने पीएम का ऑटोग्राफ इस दौरान लिया और दुनिया की संस्थाओं में बदलाव हो, ये तमाम बातें भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुख्य बातों के रूप में सामने आई हैं, कही गई हैं।
तो भले ही हिंदुस्तान में, भारत में इस वक्त रात के 2:47 हो रहे हों, लेकिन अमेरिका में इस वक्त भारत का टंका बज रहा है, भारत की गूंज सुनाई दे रही है। और अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारत की गाथा को, भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को सामने रखा, ये वो पल एक बार फिर सभी अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ अभिवादन स्वीकार किया, हाथ मिला के उनको धन्यवाद दिया। और अब इस मुलाकात के बाद, अपने संबोधन के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और ये वंदे मातरम की गूंज, भारत माता की जय, जय हिंद और मोदी मोदी के नारों से गूंजायमान अमेरिकी कांग्रेस का ये हाउस और पूरे तरीके से ये गौरव का पल, ये गौरव का क्षण। जाहिर तौर पर, राजनीतिक तौर पर कई तरह की विरोध हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र के मंदिर, यानी जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर अपने पार्लियामेंट को कहते हैं, उसी लिहाज से लोकतंत्र का मंदिर